Students, good morning. Today we are going to discuss about a new type of memory which is apart from main memory and secondary memory. And this is special kind of memory which resides inside the CPU. You cannot find this outside the CPU. And this type of memory is used to store data in temporary basis. Intention is to speed up the data transportation in between different parts of CPU. Different parts of CPU you already know that in CPU there are two parts mainly. One is control unit, another is arithmetic and logic unit. Control units transfers the data from different parts of computer system, and arithmetic unit is dedicated to perform a mathematical data. And there is special kind of memory that's known as the register, which you can find inside the CPU, and the registers speeds of the data transportation in between control unit and arithmetic and logic unit. This register, today our topic is this register. Before going to register, I will discuss about a little bit about the information. The information is categorized into two types, or you can classify the information. You can classify, or you can say there are two part in a information, and that part is, one is the instruction part, one is data part. This is the instruction part. The information consists instruction as well as data. Here question arises, so what is information, what is instruction, and what is data? In previous class we have differentiated between information and data. I mean data and information with differentiate करथिले. Today we will discuss about the instruction and the data. Students, look at 120, 130. What will be the result? What will be the result, student? Most of the time somebody is tell it is 250, but it's wrong, because ମୁଁ तुमको कहना ये एडिशन कर कि सब्सट्रैक्शन कर कि मल्टीप्लिकेशन कि डिवीजन कर, मु जस्ट मु लिखी 120 एंड 130 एवं मु तुम पचार रिजल्ट कर, तो किसी पिला कहे सर 250. तो कंप्यूटर रे गोटे ड्रॉबैक्स रोचे आम पढ़ी दैट द गिगो गार्बेज इन गार्बेज आउट. जो आम कौन से डाटा इन करवा एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग सम डाटा और इंसर्टिंग सम इंफॉर्मेशन, along with data we insert some instructions. Here suppose I give the instruction, the computer add these two numbers 120 and 30, then it 250 is right. But if the instruction is like this, then it will be minus 10. It will be minus 10. So this is instruction, and 120 and 130 is the data. So without instruction computer cannot do anything. Computer किसी भी करि परियो without instruction. Computer अपेक्षा करियो, it waits what type of instruction comes from the users. This is instruction. The instruction specifies what to do and how to do. Instruction specifies, it tells what to do and how to do. Instruction specifies what to do and how to do. And the data
वर्क्स ऑन डाटा जहाँ कंप्यूटर काम करे कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा विथ इंस्ट्रक्शन. This is difference between instruction and data. Collectively instruction data collectively creates a information. So data on which task is performed, on which job is performed, that is the data. And instructions, you give a instruction to the computer in which manner or in which manner what to do. This is instruction. तो रेजिस्टर्स को आम जो जाऊँगी ता पूर्व एक कथा मोर जानवर थिला जे इंस्ट्रक्शन कौन डाटा कौन इनफॉरमेशन कौन से किसी कहली. ओके तो रेजिस्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू रेजिस्टर्स रिसाइड्स इनसाइड द सीपीयू. हियर सीपीयू इज द कंट्रोल यूनिट. रिपीटेडली मुझे फिगर करुँची कारण तुम आवश्यक रोचे. देन ALU ये जगह हम रखुं कौन रजिस्टर. दिस इज रजिस्टर एंड हियर इज ये कैश मेमोरी यू कैन से. दिस इज कैश मेमोरी. तो कैश मेमोरी आम ये जाऊँपट करवा कैश मेमोरी एपट रखुच्छी. दिस इज कैश मेमोरी. कैश मेमोरी प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई कैश मेमोरी. दिस इज कैश मेमोरी. दिस साइड आई कैन गिव द मेमोरी मेन मेमोरी देन एठी मु लिखि पारछि दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी and this is IO input and output. एटी कौन हुए ना मेन मेमोरी receives the data from secondary memory or from the IO device and main memory forwards the data to the cache memory and cache memory forwards the data to the registers and from registers CPU control unit receive the data and as for the manner of the data control unit forwards to the ALU. एटा मु डबल एर मार्क दूसरी ताले एठी कौन होची ना कंट्रोल यूनिट रेजिस्टर्स रू किसी डाटा आणुची ALU को दउची ALU किसी परफॉर्म करची पुणी रेजिस्टर को जाउची रेजिस्टर फॉरवर्ड्स द डाटा टू द कैश मेमोरी and cache memory also forwards the data to registers. Communication is built in between registers and cache memory and cache memory from the main memory cache memory receive the information or data and main memory receive the information from the secondary memory or IO memory. So registers resides here. Registers is placed here. Registers you can find the register inside the CPU and the registers speeds of the data transportation in between ALU and CU and the registers also speeds of the data transportation in between cache memory and registers. So today we will discuss the different kind of registers. एठी मु तुमको टिके जणैली registers रो काम को तो different kind of registers से हम पढ़िबा सेतले जानिबा जे को register कोली काम करछ. There are 7 to 8 kinds of registers. One is MBR registers. Next one is SC or SCCP के जगह कहूँ ना SC कहूँ SC. Then IR and DR is also a type of registers. Here another type of register is MAR. PC is one type of registers. Here is the input registers
and output registers. Output register. तो कही दूँ या लिखी तो टिपि ना the registers contain a specific number of bits. According to that, registers is named as 8-bit register or 16-bit registers or 32-bit registers or 64-bit registers, and according to register size, processor size is calculated. The processor आम कहती बेला 32-bit register 64-bit registers कहा जाए. The registers, the size of the registers defines the how many bits can be contained by that register, that type of registers. So how many numbers, how many number of bits are there, यही थ्रू आम डिसाइड कर register size. And आउ गोटे कहते आम memory word. That memory word, the register needs specific number of bits to contain a particular number or character, and that number of bit is known as the memory word. Further mu कहूँ जे registers needs a particular number of bits to contain a character or number, and from that point of view the जतिक नंबर कंटेन कला रजिस्टर गोटे कैरेक्टर को एवं नंबर को स्टोर करने ताको आम कहते मेमोरी वर्ड. तो ये मेमोरी बफर रजिस्टर्स जनरली 15 आम ये लिखा 0 to 15 आम कहवा. दैट इज how many bits, including 0 there are 16 bits. So MBR stands for memory buffer registers. This is memory buffer register. Memory buffer register. Buffer register, memory buffer register, MBR. Okay, so memory buffer register is a 16-bit register. It starts from 0 to 15, and memory buffer registers holds the content of the memory word. The content of the memory word is also classified into two parts. One is instruction part and one is data part. Content of the memory word is classified into two parts. Gote la instruction part, gote instruction part, and gote la data part. The instruction part of the memory word goes to the instruction register, and the data part of the memory word or a data part goes to the accumulator for further processing, or data part will go to the input or output. Data part will go to the output register, IO register. Eta collectively आम कौन कहवा, this is IO register. IO register. एठी कौन हला गोटे मेमोरी वर्ड जो इंस्ट्रक्शन बा जो इनफॉरमेशन आम एंटर कले, तो इनफॉरमेशन दीटा पार्ट कहले, गोटे इंस्ट्रक्शन पार्ट, गोटे डाटा पार्ट. तो इंस्ट्रक्शन पार्ट गोज टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कौन हो से कथा पर आलोचना करिए ये आसिले, बट एति जन तुम जानी था हियर इंस्ट्रक्शन पार्ट गोज टू or it gets to transfer to the instruction registers, and the data register goes to either accumulator for further processing, or it can go to the IO registers, input and output registers. Okay, next come to the SC. SC stands for accumulator. SC stands for accumulator. Accumulator.
The accumulator is one type of register. This register contains, or this register holds what? Now this type of register holds the data which is being processed, or accumulator contains a data which is going to process, or for processing purpose accumulator contains some data. And accumulator also contain the intermediate as well as final result of the processing. After the completion, some final results will come. That final results should be stored in accumulator for temporary basis, not permanent basis. That's why accumulator is also known as process register. एको आमे कोन कहबा? एको बारे बारे कहते हमें process register. This is process register. Why this name is process register? Because the information or the instruction which is being processed by the processor, for that time, at the time of processing, the information or data, whatever you can say, are stored in this type of register, that's the accumulator registers. That's why it is known as the process registers. And after processing, final results also stored in accumulator. At question asks intermediate result and final result कौन? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ एग्जांपल ଦଉଛି ଦେଖ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 15 plus 17 ओके एठी हमें इंस्ट्रक्शन देली प्लस 5 plus 7 equal to 12 हमें 2 रखिकी 1 को नौचंदी एंड ये जो 12 है ना 5 plus 7 equal to 12 ये 12 टाक आम कहीपर मुझे एक्जाक्टली कंप्यूटर को रिलेट करूना मुझे तुमको दूसरी इंटरमीडिएट रिजल्ट कौन मैंने प्रत्येक ऑपरेशन ले मझे मझे किसी रिजल्ट आम आसे फाइनल रिजल्ट कहे जो रिजल्ट को लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग करके फाइनल रिजल्ट पाते तो ये गोटे एग्जांपल मुझे दूसरी 5 plus 7 के कहते 12 इज द इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड हियर आम कहते एडिशन करके जो रखिले गोटे टेम्पररी मेमोरी रखिले 1 को it is the 1 place, it's the 10 place, temporary memory रखिले 3 रखिले, that is the 32. So similarly, at the time of processing, some results come and that is not the final results. This type of results which comes in between the processing, not after the completion of the processing, in between the processing, at the time of during the processing, some results come. That type of results is known as the intermediate results, and intermediate results and final results are stored in accumulator. And after processing, the final results goes to memory. एठी accumulator रो result कोडी जाउचे memory. भाया MBR. तो मेमोरी पाखक जिते भी आम डाटा पठाओ इंस्ट्रक्शन पठाओ जहाँ पठाओ से कौन हुए भाया मेमोरी बफर रजिस्टर से देखिए जीव तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेसिंग द फाइनल रजिस्टर गो टू द मेमोरी भाया मेमोरी बफर रजिस्टर्स दिस इज ऑल अबाउट द accumulator. नेक्स्ट IR stands for instruction register. This is instruction register. Instruction register. Instruction register is one type of register which contain the current instruction. The instruction register contain the current instruction which is being executed. This instruction register जो इंस्ट्रक्शन को कंटेन करुच्ची तो इंस्ट्रक्शन ले भी दीटा पार्ट रोची इंस्ट्रक्शन रे दीटा पार्ट रोची गोटे हूँ ऑपरेशन पार्ट इज द ऑपरेशन पार्ट अनदर पार्ट इज एड्रेस पार्ट एड्रेस द इंस्ट्रक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 parts. One is operation part, another is address part. What is operation part or what is address part? Student, whatever you store in the computer, there is a memory space.
there is a specific memory space which is reserved to store a data, and that specific memory space is known as variable. एगुड़ी आम नेक्स्ट केबे पढ़ा वेरिएबल जो आम लैंग्वेज विषय पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विषय वेरिएबल विषय विशेष आम आलोचना करवा. तो ये मुझे कहूँ तो whatever you store or whatever you enter into the computer, that data is stored in somewhere. There is a specific reserved space in the computer memory in which space your entered data is stored, and that space is known as the variable. And there is a specific name you can give in programming. For example, that's variable name तमें नहीं परियो कौन a. A is the name which is provided by the programmer, and there is a address, and address 001 whatever may be. That the address is the collection of some binary collection of zeros and ones. Because computer understands only the binary language, this is also known as the machine language. This address, अर्थात the address of this location is stored. The address of the location is specified this address part. जो आम address part कहते हैं, address part कौन कहूँ जो instruction जो जगार रही तार address टा कौन. ओके आम आम घर आम रोच आम घर गोटे रोच दिस तो वेरिएबल तुम कहीपर वेरिएबल बा कन्स्टांट आम घर भी चेंज कर लाइफ में जदि घर गोटे आम रही दैट इज जब वेरिएबल है आम घर जो एड्रेस प्लॉट नंबर एति कॉलोनी नंबर एति जहाँ तुम जो एड्रेस रोची से एड्रेसटा से लोकेशन एड्रेस तुम घर एड्रेस. सिमिलरली देयर इज ए स्पेस which you can store the data, that space is the variable, and there is a address, and that address part जो instruction जो आम address part कहते से address part को ये specify करूँ. ओके देन instruction आम दीटा पाइल गोटे ऑपरेशन पार्ट गोटे address part. ऑपरेशन पार्ट कौन करूँ मु तो स्टार्टिंग जो पढ़ेली वेरी बिगिनिंग इनफॉरमेशन को कैटेगराइज करी दीटा पार्ट गोटे हूँ इंस्ट्रक्शन पार्ट गोटे हूँ डाटा पार्ट. इंस्ट्रक्शन पार्ट में कही ना इंस्ट्रक्शन पार्ट स्पेसिफाइज और इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. Similarly, operation specifies what to do. There is different kind of operations like read operation, write operation, addition, subtraction, multiplication, division, clear, or modulus. Different types of instructions are there. पाखापाखि 200 भली instructions को आम यूज करते at the time of writing the machine language. असेंबली लैंग्वेज भी किसी भाया इंस्ट्रक्शन यूज करा स्पेसिफिक लिमोनिक्स एंड कोड्स आम यूज कर. ओके तेन इंस्ट्रक्शन गोटे कोड रोज से इंस्ट्रक्शन आ कौन टे कर दैट इंस्ट्रक्शन पार्ट दैट इज नोन एज द ऑपरेशन पार्ट. जो इंस्ट्रक्शन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज द ऑपरेशन पार्ट, एंड जो इंस्ट्रक्शन दि जाए से इंस्ट्रक्शन कौटी अच्छी से हूँ एड्रेस पार्ट. क्लियर. तो ये गला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उपरे. नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रजिस्टर्स आम जा गोटे डाटा रजिस्टर्स. दिस इज नोन एज द डाटा रजिस्टर्स. हियर डाटा रजिस्टर्स होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड्स. तो व्हाट इज मेमोरी ऑपरेंड्स, व्हाट इज ऑपरेंड, व्हाट इज ऑपरेटर. मुझे तुमको कही फर्स्ट क्लास बोधे कही मन पड़ू 2 + 3. हियर 2 and 3 is operand. This is operand. Operand, yes. This is operand, and plus is the operator. एठी आज क्लास भीतर तुम रिलेट कर सर प्लस इज द इंस्ट्रक्शन. ओके द ऑपरेटर इज द इंस्ट्रक्शन. ऑपरेटर सेज व्हाट टू डू. ऑपरेटर सेज ऑपरेटर बिलोंग्स टू द ऑपरेशन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो एठी कहूँ व्हाट टू डू ना वी हैव टू डू द एडिशन हियर. ओके तो दिस सिंबल स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर ऑपरेशन. दिस इज ऑपरेटर, and operation on performed on which operation can be performed, the operation is going to perform on which data, that part is the 2 and 3. कहाँ ऊपर एडिशन करवा
That's the 2 and 3. So 2 and 3 is the operand. And here a data register holds the operand part of the instruction or the information. The information जो दुईटा पार्ट मुझे कही गोटे थिला instruction part आउ गोटे थिला data part, and data part को contain करिया पई there is a register. That register is the data register, and data part is also known as operand memory. This is operand memory or memory operand. The data register holds the memory operand. मुझे लिखिबी सब गुडी लिखिबी. Next, students focus on this register, that is memory address registers. This is memory address registers. Address register. Memory address registers. The memory address registers holds the address of the memory location of the current instruction. एठी के current instruction को क्या contain कला instruction register, but address of the current instruction, the address of the तुम कही परियो yes, the address of the location where the data is stored. एठी हमें कौन कहले एटी memory buffer register कौन कहले the memory buffer registers contain the memory word. Okay, and memory word रे memory buffer registers कौन कहला memory word. एटा धरो memory buffer registers, ए memory buffer registers भितरे आमे कौन पाइले गोटे डाटा पाइछन, डाटा रखाला memory word रखाला एवं ए memory word जोठी रखागला ए डाटा को ए डाटार एड्रेस पुणी गोटे अछि ना यार गोटे एड्रेस अछि ना नहीं, and that address is stored as memory address registers. Then एठी कहिबा आमे जो इनफॉरमेशन को एंट्री कले इनफॉरमेशन जाय के रहउची मेमोरी बफर रजिस्टर्स रे एटा इनफॉरमेशन जाय के कोठी रेला मेमोरी बफर रजिस्टर्स इट्स ओके जो लोकेशन ला रहिला से लोकेशन ला गोटा एड्रेस अछि ना नहीं, and that address तमे ताको इंडेक्स बोली कहि परिया that address or index is stored in memory address registers. The memory address registers holds the address of the memory location where current instruction is stored or current current data is stored. Clear? एठी हला memory address registers. It is current instruction ला address को memory address registers रखुची. PC register कौन रखुची ना ता परे जो instruction आसु PC registers it is आमे PC कहि परिया और PCR भी कहि परिया program counter registers. This is program counter register. The program counter registers contain the address of the next instruction to be executed. Current instruction ला address को के store करि रखला memory address registers. Current instruction रा address को के store करि रखला memory address registers. Current instruction जताले execution होउची सेताले आउ कोडी से instruction waiting रा थिबे ना नहीं, waiting stage रा थिबे ना नहीं, गोटे there is a queue. आमे जताले job scheduling operating system रे तमे ताले पढिबा आगु को गोटे देखिबो job scheduling अर्थात multiple jobs enter करा होची. There are multiple jobs which are performed by the CPU, and a CPU schedules the multiple jobs in a different manners. आमे fast in fast out FIFO बोली कहि परिया fast in fast out manner आमे job scheduling करि परिया priority basis रा job scheduling करि परिया round robin there is a job scheduling that round robin scheduling ये जतला operating system आमे पढिबा operating system रे आमे job scheduling विषय पढिबा. तो जॉब शेड्यूलिंग रे कौन हुई थाए ना गोटे जॉब जताले परफॉर्म करा होची गोटे जॉब को जताले एग्जीक्यूशन होची गोटे प्रोग्राम को जताले एग्जीक्यूशन करा जाउची सताले अनदर प्रोग्राम इज इन वेटिंग स्टेट ताकू वेट करची तार नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो सेटा को करंट इंस्ट्रक्शन ला एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स रखला वाले ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड. या पर जो इंस्ट्रक्शन चली तापर जो इंस्ट्रक्शन आसूँ से इंस्ट्रक्शन एड्रेस को किए स्टोर कर रखुच्छी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स. एंड इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स फ्रॉम इट्स नेम यू कैन अंडरस्टैंड
At the time of when you enter some information to the CPU, at that time that information is stored in the input registers for temporary basis, and after completion of the after completion of the processing, the final results comes from the accumulator to the memory or to output registers. जो आउटपुट रजिस्टर्स रु आम आउटपुट डिवाइस बा मॉनिटर को इनफॉरमेशन बा रिजल्ट्स आनी परछन. दिस इज ऑल अबाउट योर रजिस्टर्स. आई विल राइट वन बाय वन. जस्ट लुक एट. First one is memory buffer registers. Memory buffer registers. मैं यार फुल फॉर्म देज. The memory buffer registers. This register holds the content of memory word. Holds the content of memory word. Memory word. Okay. Next, memory word classified into two parts. That is instruction part and data part. It contains the instruction and data. Instruction आम खाली कह instruction part बोली कह बा instruction and data बोली आम कह परिवा. Instruction gets transferred to IR instruction register. Next, data either goes to SC, that's the accumulator, for processing or gets transferred to IO registers. Okay. तो मेमोरी मु यार फुल फॉर्म लिखु ना ऑलरेडी लिखी देती यार. तो MBR stands for memory buffer registers. This register holds this. Okay, गला एटा मु बुझे सारछि एगो टिपि नबो. नेक्स्ट आमर थिला केन SC. SC stands for the accumulator. SC holds the data
for processing. For processing. SC holds the data for processing. It can hold intermediate result or final result. Final result after processing. After processing. Okay. The final result goes to memory from SC via MBR, memory buffer registers. जते भी आम डाटा दौरान बा इनफॉरमेशन दौरान सब गुड़िक मेमोरी बफर रेजिस्टर्स ही जीव प्रथम. नेक्स्ट SC is also known as process register. Process register. Okay, this is accumulator. Next, IR. Instruction registers. Next part is instruction IR. Instruction registers. Instruction register, first part, instruction register holds the current instruction which is being executed, There are two parts of an instruction. Instruction that is operation part and data part. Sorry, address part. Address operation part goes to SC for processing. To control unit. Operation part goes to control unit for further processing. And data part or address part goes to
memory address register goes to memory address register. Okay, this is instruction registers. Next we will discuss about the data registers, that is DR. एवढे सब नोट करना हुआ. DR. DR stands for data register. Data register holds the memory operand. Memory operand. Okay. Next, memory address register. Memory address registers. Memory address registers. Okay. Memory address register holds the address of the current instruction. Address of the current, or you can say the address of the memory location. Address of the memory location where current instruction stored. Current instruction resides. Okay. Next, PCR, program counter and register. Program counter register holds the address of the next instruction, address of the next instruction to be executed. This is PCR, and last one is IO register, input output registers. ताको हमें कैटेगोराइज कर दवा. इनपुट रजिस्टर, आईओ रजिस्टर नहीं, आउटपुट रजिस्टर लिखा सेपरेटली. Then input registers. This register holds the enter data from input devices, from input unit लग जाता है, input unit. Next, output registers, output register. This register holds
the final result. Now this registers holds the result. This register holds the result is to be provided to output unit, provided to output unit. Okay students, this is all about the registers. Okay, next आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करूँगी द बस. What is bus? Bus is just a cable in between different part of the computer. And why you cable need? Cable is a media through which communication is possible. Here questions arise, what is communication? Communication is a process to transfer the data from here to here to there and here to there. Okay. Suppose there is a device and device is the sender and is another device, that device is a receiver. When that device will be sender? If this device sends some information, sends some message to the other device, then it will be a sender, and other device B suppose receive the information which is forwarded by the device A will be the receiver. When this mechanism is going on, when this process is going on, data transferring process, at that time you can say we are able to build a communication. Student, communication and connection is different. Connection is the physical connection in between two parts of the computer. Connection is the physical connection in between two parts of the computer. Suppose here is a part and that part is A part and it is also a part, that is B part. गोटे पार्ट भितर आम कम्युनिकेशन कर गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर भितर कम्युनिकेशन करा आमर उद्देश्य गोटे बस विषय पढ़ा. तो देयर इज ए केबल वी जस्ट फिक्स ए केबल इन बिटवीन कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी. दिस इज ए केबल एंड ताको आम कहते कौन बस. बस इज जस्ट ए केबल थ्रू व्हिच computer can transfer the data to the computer B and vice versa. Computer B can also transfer the data. जत बेले आम केवल केबल दीटा को लगे एट द टाइम आम कौन कह देयर इज ए कनेक्शन बट कम्युनिकेशन केतल कहवा जो आम डाटा को एपट सेपट ट्रांसफर कर. व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग ऑन और व्हेन देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन एट दैट टाइम वी कैन से देयर इज ए कम्युनिकेशन. सपोज मुझे गोटे लिखुचे स्टूडेंट्स गोटे वर्ड लिखुचे काइजेन. मुझे जो काइजेन लिखुची गोटे पिला को मुझे हैंडसेक करुच्ची गोटे पिला को मुझे हैंडसेक करी कहूँ काइजेन. से काइजेन मीनिंग बुझीपारना कि मुझे हैंडसेक कर आम कौन कहते कम्युनिकेशन कनेक्शन इज देयर जे मुझे गोटे पिला को हैंडसेक कर अर्थात कनेक्शन से अच्छी बट कम्युनिकेशन फॉल बिकॉज दैट्स other side of student, that student cannot understand what shark says. तो काइजेन फ्रॉम मीनिंग जो सी जानूची से सी कौन कर कम्युनिकेशन बिल्डअप हो पार. ओके, काइजेन इज ए जापानीज वर्ड. तो कम्युनिकेशन कनेक्शन इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. विदाउट कनेक्शन there is no communication. And a connection may be physical touchable or physically untouchable. The touchable connection
The visible connection is known as the wired communication connection. ये आम कनेक्शन जो कर गोटे वायर्ड कनेक्शन कर वायरलेस कम्युनिकेशन कर वायरलेस कनेक्शन दे. The connection which is physically touchable and visible is known as the wired connection, and the connection which is not visible or touchable is known as the wireless connection. Our next chapter अच्छी the different kind of bus, address bus, control bus, ये different kind of bus अच्छी आम से बस विषय ही पढ़ा. तेणु बस मोर कह अर्थ हूँ बस इज यूज टू बिल्ड ए कम्युनिकेशन. And for communication point of view, there are 5 fundamental components are there to build a communication. One is sender, which initiates the communication. The sender is the device which initiates the communication, which starts the communication, जे कि कौन सी डाटा सेंड करूँ. Second one is receiver. Receiver is another component of the communication. The receiver is a device or person, whatever you can say. The receiver responds the sender. The sender is a device which initiates the communication, and the receiver is a device which responds the sender. When the forwarded data or sent data is received by someone, then we can say that person is the receiver. जदि सेंडर किसी डाटा सेंड करुच्ची कहीं रिसीव करू ना ताले आम कह देयर इज नो रिसीवर. थर्ड पार्ट इज दैट इज द मैसेज, और आम कहते इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज the which is being transferred in between sender and receiver. The message or information which is being communicated, which is being transferred in between sender and receiver. And to transfer some information or to transfer the message from sender to receiver, there is a media जहाँ को आम कहते wire or wireless media, और आम कहते कौन medium. There is a medium. वायरलेस मीडियम हो पारे नहले वायर मीडियम हो पारे. There are 4 components. One is sender, receiver, message, and media or medium. And most important, last but not least, most important part of the communication is the protocol. एटा को मुझे हिंट्स दे दूसरी, एटा नेटवर्किंग चैप्टर ही डिटेल्स आम जावा प्रोटोकॉल बाबद में. किंतु या पर जो पढ़ेबी बस बाबद में, ये बस रे एक कम्युनिकेशन को बुझार थिला. तो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. प्रोटोकॉल आम कहि परिया इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यू कैन से इट इज एग्रीमेंट इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. एंड प्रोटोकॉल डिसाइड्स द हाउ डाटा विल बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन सोर्स टू एंड डेस्टिनेशन. Protocol governs or manage data transportation in between source and destination. Protocol, different kind of protocols you can find. HTTP तुम जो नेट यूज करो तुम देखो HTTP लिखा हो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, TCP/IP, different kind of protocols are there. P2P protocol, ट्रिपल P protocol is there. गुड़ाए प्रोटोकॉल सब रही आम प्रोटोकॉल विषय पढ़ा. तो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. इट इज द एग्रीमेंट इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर व्हिच गवर्न्स द डाटा ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. तो फॉर टुडे इट इज ओवर. थैंक यू.